everyone. I am Usman Sheikh, and today we will be presenting on Azure App Service. Here with me is Apeksha, who is also a cloud solution architect from Ireland in Microsoft. So over to you, Apeksha, a bit about yourself, and then we can get started. Thanks, Usman. My name is Apeksha Patil. I work at Microsoft as a cloud solution architect. It's been more than 2 years I'm working in the same role. My job role is like a consultant, helping as an advisory to all the customers all over the globe. Thank you. Great. So I will be sharing my screen, or then we can formally start. So I hope my screen is visible to everyone. So as I explained earlier, आज के सेशन में we will be talking more about application services. पिछले सेशन के अंदर Bilal talked about infrastructure. So a quick recap of the services or the solution areas we will be covering. A lot of events are happening. So if you want to stay tuned, you can check events.hec.gov.pk, and all the recordings of the session would be available later on, would be at edu.tv .hec.gov.pk. So this is the third session of the series. Later on आगे हम बात करेंगे डेटा के ऊपर, AI solutions के ऊपर, business application जिसके अंदर Microsoft 365, Dynamics, Power Platform, which comprise of low code and no code solution, security, career development, how Microsoft data centers are aligned, and what's the vision. And at the end, we would be talking about modern software development in companies like Microsoft. So we have sort of grouped all the interesting topics and everything that's related to cloud. So I hope you will enjoy the series and the session. So a bit about myself. I did my graduation from University of Education in 2015 in BSIT, and my master's in Master in Software Project Management in 2021. I'm also a cloud solution architect, similar to Apeksha. It's been almost 1.9 years with Microsoft, and I have overall experience of 9 years in the industry. And my expertise are in application services and DevOps part. Again, Apeksha, over to you if you want to have a quick recap of your expertise. Sure. Something about me. I did masters in data analytics in 2018 in Ireland. Then I'm a cloud solution architect currently, but before that I was a iOS developer. I have like in industry 8 years of experience with lot of application development, whether it's iOS, whether it's .NET or website development or a lot others with now with the Azure. And it's been a great journey with Microsoft for more than 2 years, 2.5 years, and my expertise moreover lies in data and AI. Thank you. Great. Thank you, Apeksha. So आज के सेशन के अंदर हम जो जो एरियाज को टच कर रहे होंगे, सो क्विकली मैं उसका आपको बता दूं. हम इंडस्ट्री डिमांड्स के ऊपर बात करेंगे. सो यू कंसिडर दिस एज a problem statement. So, and then we will start positioning कि Microsoft की जो services हैं वो इन challenges को कैसे resolve कर रही हैं, जो development से related हैं या turnkey solution से related हैं. And then we will talk about how innovation is happening and how Microsoft is addressing that. And then we'll quickly overview some of the past services. हम थोड़ा सा deep dive discussion करेंगे around hosting services, and then we'll do a very interesting discussion. So the idea is to summarize what we learned today in a form of real life example. And at the end, if the time allows, we'll do two demos, one on the data factory and one on the development life cycle. So yep, हम आज इस सारे topics के बारे में बात कर रहे होंगे. So let's start with the industry demands and the problem statement.
So nowadays, if we talk about any sector, any industry, it's quite rapidly moving towards digital space. What that means is कि जितनी भी organizations हैं, they are heavily using applications, not only for the end customers. Let's say if you pick food industry, you see a lot of applications for the food delivery and for the, let's say, grocery delivery. And if you talk about the education sector, so after the COVID, everything has been gone digital. So it's not only for the end customers, but for the internal management. We see a lot of HRM solutions, management solutions for employee management or the communication. So we are heavily relying on the applications, and it's been quite interesting that after the AI boom, applications, not only हम जो जैसा business application Dynamics 365 या built in, so या हमारे पास off the shelf applications होती हैं, उसके अलावा custom applications के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. So जितना ट्रेंड है, हम ट्रेंड को अगर देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट एज अ इंडस्ट्री लीडर, आईएसवी, माइक्रोसॉफ्ट क्या इसको कैसे देख रहा है? So when to address all those challenges, what Microsoft is hearing is कि हमारे पास application go to market जो time है वो बहुत कम है. So if you have an idea, we need to build as soon as possible, because the business, the advantage of the what you can say is the market first advantage is quite important. So अगर कोई एक एप्लीकेशन पहले लॉन्च कर देता है, तो ऑब्वियसली जितनी भी एंड कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ रिलाय करती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो पॉइनियर्स हैं. So productivity is quite important. You need a platform जो कि जहाँ पे आप क्विकली डेवलप भी कर सकें और मैनेज भी कर सकें. एंड देन यू नीड द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकें. और लेट्स सपोज इफ यू वांट टू वर्क इन अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट जहाँ के ऊपर आपके पास डेटाबेस है, या आपका जो जितने भी आपके जो डाटा कंटेंट है वो आप नहीं क्लाउड के ऊपर मूव करना चाहते. सो इस तरह वाले एनवायरनमेंट के ऊपर के वेब एप्लीकेशन जो है, या आपकी एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर हो, मगर स्टिल जो डेटा है या यूजर का जो जितने भी डायरेक्टरी है वो स्टिल आपके पास ऑन प्रेमिसेस आप रखना चाहते हो, बिकॉज ऑफ सम कंप्लाइंट रीजन. तो आप उस केस के अंदर आपको जो जो प्लेटफॉर्म आप चूज करना चाहे वहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले. एंड देन वी टॉक अबाउट द सिंप्लिसिटी. So it's one of the important driving factor के जितनी सारी applications आ चुकी हैं, या जितने सारे आपके पास frameworks आ चुके हैं, तो you have to spend a lot of time building your application, and you want to spend less time on the platform you choose. So again, time to go to market जो time है वो हमने कम से कम करना होता है. Uh, the patterns that we see is, let's say, if so again, I need a perspective guidance on how my journey, that best practices is baked in. So what that means is, uh, I need patterns or the best practices along when I am developing an application. So जो platform है वो आपको बताए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज सोल्यूशन डेवलप कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ऑल दोज इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो हमारे पास उस प्लेटफॉर्म में पहले से ही बिल्ट इन हो. यानी आपको साथ साथ आपको एडवाइजरी मिल रही हो, आपको गाइडेंस मिल रही हो कि अगर आपने कोई चीज़ डिप्लॉय की है तो इज इट कॉस्ट इफेक्टिव, क्या आप उसको किसी तरीके से जो आपने टीयर सेलेक्ट किया है या जो आपने सोल्यूशन सेलेक्ट किया है, इससे कुछ बेहतर चीज़ हो सकती है, या आप उसको किसी तरीके से रिजर्व कर सकते हैं, किसी तरीके से आप उसमें से कम पैसे स्पेंड करके तो आप एक अच्छा सोल्यूशन और कम सर्विसेज को यूज करते हुए सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं. सो अगेन, यू नीड ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस व्हेन यू आर डेवलपिंग अ सोल्यूशन, and the consistency is very important. So if every time you develop anything, you want a consistent experience all over the services. Like आपने एप्लीकेशन होस्ट की, नाउ यू वांट टू यूज अ डेटाबेस, तो आपको जो जिस तरह का आपको जो यूजर जर्नी मिला था,
एक एक चीज सेटअप करते हुए सिमिलर एक्सपीरियंस आपको बाकी सर्विसेज सेटअप करते हुए मिले, ना कि आपको अगेन एक कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट मिले जिसमें आपको सेटअप करना ही मुश्किल हो जाए। सो अगेन लेस एफर्ट के साथ आप कैसे अचीव कर सकते हो ज्यादा चीजें, दैट्स व्हाट वी आर हियरिंग, एंड लेट्स सी हाउ माइक्रोसॉफ्ट इज एड्रेसिंग दोज challenges. So, Microsoft, how that set us apart is we have a complete ecosystem where from the development or hosting your application or hosting your code and scanning your application or the code for vulnerabilities, or if you needed a pair programming or suggestion on जो आप कोड लिख रहे हो वहां से लेके टिल एंड डिप्लॉयमेंट तक आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज मिलती हैं. सो द गोल इज टू स्पेंड लेस टाइम ऑन द डेवलपमेंट एंड मोर टाइम ऑन फोकसिंग ऑन योर बिजनेस. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. गिटहब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके अंदर आपको कम टाइम लगता है डेवलप करने में. गिटहब हैज को पायलट which saves you a lot of time on development. What that means is, from the recent stats, 30% of the code that you do is of the application is done by AI. So, and Microsoft has a goal to make it more effective. So the 50% of the code would be done by AI, and you have to do less or have to spend less time on development code. And when you talk about the hosting, so in Azure, you see a lot of turnkey solutions. So let's say if you want to deploy an application, you have to spend less time, which we'll talk about later today. जैसे app service है. अगर आपने कुछ एक छोटी सी सर्विस डिप्लॉय करनी, यू हैव फंक्शन एप्स, एंड इफ यू हैव अ लेगेसी एप्लीकेशन ऑन प्रेमिसेस के ऊपर चल रही है एक एप्लीकेशन, और लेटेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के ऊपर नहीं भी है, तो आप कैसे उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हो, कैसे आप उसको एक वर्चुअल मशीन के ऊपर जो कि आउटडेटेड के ऊपर बेशक चल रही है, लेकिन यू वांट टू स्पेंड लेस on your infrastructure, physical infrastructure, and you want to move everything to the cloud, तो still आपके पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है. When we talk about the IDE, so it's not just a simple IDE जहाँ के ऊपर आप एक simple एक application develop कर सकते हो. इसके अंदर आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सच एज आप यूनिट टेस्टिंग के अंदर आपको हेल्प मिल जाती है, आपको कोड एनालिसिस के अंदर कि आपने जो कोड लिखा है वो किसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऊपर है या बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है कि नहीं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप चीज एक डिप्लॉय कर लेते हो, तो अगर आपको बाद के अंदर अपने कोड में फ्लॉज मिलते हैं तो तब उसको फिक्स करने में बहुत टाइम लगता है. Or again, time is the money. So you want to save time on developing your solution. And at the end of the day, you have, if you are a business user and if you are not a coder, we have such solutions like Power Apps, जहाँ के ऊपर without writing a single line of code, you can develop your application. So, a quickly highlight, our mission is to set up an engineering system within seconds where you can contribute from any device, any platform, and collaborate with confidence. What that means is you can develop on the cloud. So gone are those days when you needed a heavy or high-end machine जहाँ के ऊपर आप जहाँ पैसे इन्वेस्ट करो सिर्फ एक लैपटॉप के अंदर. So you have Microsoft DevBox. So I'm highlighting few things that you can directly start developing without spending much time or much efforts or even much cost on the laptop or the hardware. So Microsoft has DevBox where all the team members can leverage it. एक आपको virtual machine मिल जाती है जहाँ के अंदर आपके पास application पहले से installed होती हैं और आप development कर सकते हो. So you don't have to worry about the computation power. So because it's cloud, अगर आपको computation power ज़्यादा चाहिए, so you scale up. And same goes if you don't have to spend a lot of time on developing an environment. So let's say अगर आपने एक अपना develop environment बना दिया और आपने इसको आपके पास multiple teams हैं. So अगर एक दूसरी team ने वही environment दोबारा से setup करना है, so you can set templates and you can easily spin up from all those templates. So again, अगर आप
एक प्रोग्राम, अगर आप एक प्रॉपर एक इंजीनियरिंग अप्रोच को देखें, तो आप एक चीज डॉक्यूमेंट करते हो और वो आपको रीयूजेबिलिटी में काफी हेल्प करती है। तो सेम कोर्स जिस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सेम आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और यू कैन मेक अ टेम्पलेट, एंड फ्रॉम दैट टेम्पलेट यू कैन स्पिन अप a lot of environments, QA, dev, and production environment. So वो जो चीज़ के that run on my machine only can be easily addressed. आपके पास जहाँ जैसे एक environment पे चल रहा है, एक यूजर के पास चल रहा है, दूसरे यूजर को भी वही एक्सपीरियंस मिलेगा। And if you want to literally spend less time and you want to code right away, so you can utilize GitHub code spaces. आप directly अपने browser से code कर सकते हो, और आपको वही सारी और जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने PHP में एप्लीकेशन बनानी है, पाइथन में बनानी है, सो वो सारी चीज़ें जो कि आपको इन्वायरमेंट सेटअप में लगती हैं, आप उससे बाहर आके आप डायरेक्टली ब्राउजर पे कोड करिए और इन्वायरमेंट आपको पहले से एक सेटअप मिल जाता है। So again, you have to configure one time, or reusability, you can reap the reusability. So let's take a moment and understand how our products enable innovation. So we'll talk about few scenarios here, और हर scenario के हिसाब से कौन सी application in terms of hosting आपके लिए बेहतर रहेगी. So let's say if you have an application uh, जिसमें आपके पास जो आपके जो जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें फॉर इंस्टेंस आपके पास अगर जो उसके अंदर जो कोड चल रहा है वो इट्स एन आउटडेटेड, या वो आपके पास जो उसके अंदर फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं वो सारे आपको क्लाउड के अंदर रेडीली अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली पास सर्विस के अंदर या वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो आप अपनी वीएम जो वर्चुअल मशीन आपके पास जिस तरह एक स्टैंडर्ड और लेगेसी सर्विस चल रहे हैं वो एज इज आप क्लाउड के ऊपर लेके आ सकते हो, विदाउट स्पेंडिंग मच एफर्ट कि आप रीराइट करो एप्लीकेशन को। तो उस केस के अंदर वर्चुअल मशीन आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पास एक माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन चल रही है और आपके मल्टी फ्रेमवर्क है और you are maintaining it, the application and environment through Kubernetes. So we have the same flavor available over the cloud with Azure Kubernetes service. So again, if you are doing something, वो चीज आपके पास क्लाउड में easily available है। um, let's talk about if you are a developer and you just want to start without spending much time on the hosting, or without worrying about कि मुझे एक नेटवर्क बनाना है, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, या मुझे हार्डवेयर सेलेक्ट करना है। सो उस सारे से अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं और डायरेक्टली एक एप्लीकेशन को लाइव करना चाह रहे हैं, तो देन आप पैस सर्विसेज में जाते हैं, जिसमें एक वेब ऐप सर्विस है हमारे पास, और हम उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन द सेटिंग अप द एनवायरनमेंट एंड इवन आफ्टरवर्ड्स मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट. We're not only talking about Microsoft stack. It can be any stack. Let's say it can be PHP, it can be Java application, Python application. So all those applications and all those frameworks are easily available over the cloud. Or very interesting topic. Serverless. So let's say आपके पास एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, एंड यू वांट टू टू हैव अ बैकग्राउंड सर्विस जहाँ के ऊपर लेट्स से कोई भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, जो कि आपको एक नोटिफिकेशन एट द एंड ऑफ अ डे आ जाए कि लेट्स सपोज आपका एक रिटेल सिस्टम चल रहा है और यू वांट टू गेट अ नोटिफिकेशन एट द एंड ऑफ अ डे हाउ मेनी आइटम्स वर सोल्ड टुडे। सो इस तरह की बैकग्राउंड जॉब कोई करनी है, आपने कॉन्फ़िगर करनी है, या आपने यूजर को एक नोटिफिकेशन, जैसे ही न्यू यूजर साइन अप हो आपने उसको एक नोटिफिकेशन भेजना है न्यूज़लेटर का, या आपने उसको एक मेंबरशिप का नोटिफिकेशन भेजना है। ऐसी चीजें जो बैकग्राउंड सर्विसेज या जो पैरेलल चलानी है आपको, और उनका एक स्पेसिफिक टास्क है, एक यूनिट ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए हमारे पास एजर फंक्शंस हैं, या अगर आपने उसके लिए कोड नहीं करना चाहते तो लॉजिक एप्स हैं। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप एप्लीकेशन अपनी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। सो अगेन अगर आप लेफ्ट टूवर्ड्स राइट जाएं तो the more control you have is on the environment and you have the flexibility to configure, and but if you want more productivity, you want to spend less time on the development, then you go towards right.
you opt for containers, you opt for serverless or the low code. When we talk about the databases, so it can be any database. It can be MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB. किसी भी आप डेटाबेस के आप अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो आपके पास क्लाउड में अवेलेबल है. एंड प्लस जो डेवलप जो डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल होता है उसको ऑटोमेट करने के भी आपके पास इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. सो विच विल बी डेमोइंग एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपने एक एप्लीकेशन कोड अपना जो है वो डिप्लॉय किया या आपने मेंटेन कर रहे हो गिटहब के ऊपर या एजर डेवऑप्स के ऊपर या किसी भी टूल के ऊपर, तो वो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है एजर के साथ. So you have to, when you push a code on your repository, वो कैसे डिप्लॉय हो जाएगा ऑटो. यानी कि आप उसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो है वो बड़ी इजीली सेटअप कर सकते हैं. सो ऑल दोज लेटेस्ट फीचर ऑफ द इंडस्ट्री आर इन्फ्यूज एंड अवेलेबल over Azure. I would quickly highlight this. Cloud services model, you can consider this as a recap. So last वाले session के अंदर it was more on the infrastructure side. Um, in today's session, we are focusing on the platform as a service. So जब हम platform as a service की बात करें तो you only have to focus on the data and the access and application itself. So you don't have to worry about के network कैसे setup होगा, storage क्या है, computational power हमें क्या चाहिए, hardware क्या है, operating system. So you only have to worry about your application and the data. And later on in this next sessions, we will be talking about the software service. Uh, it's sort of a recap, or we can say ये हमारे पास कुछ services हैं जो हमारे पास application development की हैं और हमारे पास इसमें hosting की भी services हैं plus data and some of the intelligence service. So it's not all. There are a lot of services on Microsoft Azure, but I want to highlight few. जैसे कि web apps के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे, API के बारे में बात कर रहे होंगे, Azure functions के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि आपके hosting के लिए हैं. और अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें सच एज जहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम एजर डेवऑप्स और गिटहब की बात करते हैं. एंड देन फॉर द डेटा वी हैव अ लॉट ऑफ सर्विसेज जहाँ पे आप ETL परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा को. एक स्टैंडर्ड डेटा यानी स्ट्रक्चरल डेटा और अनस्ट्रक्चरल डेटा को आप मेंटेन कर सकते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस रन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग रन कर सकते हैं. देन वी हैव इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस जो कि आपके पास AI इन्फ्यूज सॉल्यूशंस है जहाँ के ऊपर आप कस्टम विजन, आपने एनालिटिक्स परफॉर्म करने हैं, जो यूजर टेक्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं, या आपने कोई चैटबॉट्स बनाने हैं, तो वो सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं. और अगर हम इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में बात करें तो आजकल के दौर में there are every organization has a lot of applications running, and if you want to communicate between those applications, you need a stand or a middleware or a solution. So if you want to write such middleware, then we go for the integration services such as Azure Function. For the communication, we heavily rely on Service Bus. And if you want to secure and maintain your APIs, तो फिर हम API management की बात करते हैं. So that's a quick sort of overview of the services. Security के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि because security is very important component. तो हमारे पास built-in security services or solutions available हैं. So for example, if you want to authenticate your application from let's say Google or Facebook or your own your own credentials. So you have the ability using Entra ID. And if you want to maintain the secret, so every application has some secrets, let's say key value pairs of let's say database. आपके पास कोई और आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर रहे हो तो उनके बीच जो ऑथेंटिकेशन होती है इट्स बिटवीन अ सीक्रेट एंड लेट्स से क्रेडेंशियल्स. तो वो क्रेडेंशियल्स आप कहाँ के ऊपर सेव करोगे? अगर आप अपने कोड में सेव करोगे तो इट कैन बी इजीली एक्सपोज. So और कोई भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है. So if you want to secure your application credentials and such key value pairs, so then you go for the key vault. So there are a lot of services that are turnkey solution. You don't have to spend a lot of time
on setting up or the environment, you can quickly use them and deploy your application. Uh, let's focus on a few of the services जो कि बहुत कॉमन है अगर आपने एप्लीकेशन अपनी डिप्लॉय करनी है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपके पास आप एक डेवलपर हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है how to host your application, and then comes afterwards the databases, the AI and all that jazz. So we'll focus on easy, from the easy then to let's say more towards where you have flexibility on the environment. So if अगर आपने एक वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, or let's say if you nowadays the applications are not monolithic, microservice oriented application है, which means कि आपके पास एक एप्लीकेशन होगी डॉटनेट के अंदर, हो सकता है एक एप्लीकेशन पाइथन में हो सकता है एक एप्लीकेशन पीएचपी में हो। तो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन की अगर एग्जांपल लें तो उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और नाउ डेज यू वांट टू सेपरेट ऑल दोस मॉड्यूल्स इन अ सेपरेट एप्लीकेशन, और आप उनको सेपरेटली डिप्लॉय करना चाहते हो, उनको मेंटेन करना चाहते हो। सो रीजन दैट कि अगर कहीं के ऊपर फॉर एग्जांपल आपकी सेल चल रही है एप्लीकेशन के ऊपर, फॉर लेट्स से देयर इज अ ब्लैक फ्राइडे और एनी इवेंट, तो वहां के ऊपर आपका जो यूजर का जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है कैटलॉग के ऊपर, और आपने उसको स्केल अप करना है। तो यू डोंट हैव, इफ यू कंसिडर दिस एज अ मोनोलिथिक एप्लीकेशन, तो वहां पे आप एक पूरी वर्चुअल मशीन को आप स्केल अप करोगे, लेकिन एट द एंड स्टिल आपकी एप्लीकेशन डाउन होगी। तो हम उस वाले सिनेरियोज के अंदर कि जहां पे आप इंडिविजुअली एक पोर्शन को मेंटेन करना चाहते हो एप्लीकेशन के, तो देन कम्स एजर ऐप सर्विस। वहां पे आप इजीली इस तरह की चीज को, फॉर एग्जांपल माइक्रो सर्विस को इजीली मेंटेन कर सकते हो, एपीआईज अपनी होस्ट कर सकते हो, क्विकली स्केलेबल है, ऑटो स्केलिंग सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेल पीरियड एंड इफ यू वांट टू स्केल the categories or the products or your catalog, या आपने जो order processing है उसको सेल करना है, तो you can just auto you can configure and you don't have to worry about manually कि आप जाके आप किसी भी environment को scale up करोगे, उसका tier change करोगे, and it can go scale out as well easily. Static web apps. So let's say if you have application जो कि informational site है and you don't want to spend much money on hosting this service. So अगर एक आपके पास एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है जैसे HTML CSS वाली, तो आप इजीली डिप्लॉय कर सकते हो ऑन स्टैटिक वेब एप्स, जो कि आपको चार्ज भी नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, एंड ऑल्सो वी हैव फ्री टियर अवेलेबल, so you can host a lot of free applications on the cloud, but on the other side या आप उसमें अपनी कस्टम डोमेन नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते, जो कि फीचर जब आप क्लाउड एक्सप्लोर करोगे तो आपको अपने हिसाब से देख सकते हो कि मेरा गोल क्या है और मैं कितना स्पेंड करना चाह रहा हूँ। स्टैटिक वेब ऐप के अंदर वन ऑफ द की फीचर्स के CI/CD बड़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, सो you don't have to manually push the code. Again, similar to standard web apps, you can easily configure DevOps in the picture, or it can deploy easily when you tailor your application. We talked about Azure Functions, so let's dive a bit more deep into Azure Functions. So Azure Functions काम कैसे करते हैं? So we have 3 trigger points. So एक तो आपके किसी भी टाइम बेस्ड इवेंट के ऊपर आप इनको ट्रिगर कर सकते हो फंक्शन को। सो अगर मैं इसको वन लाइनर में कहूँ कि Azure Functions क्या है, so it's an event and a code. A code can be simple, sending a notification. A code can be simple as generating a report. So इस तरह के कोड को जो एक स्टैंड अलोन या जो बैकग्राउंड या इन पैरेलल आप रन करना चाहते हो, तो उसके लिए यू वांट टू स्पेंड लेस टाइम, or you don't want to modify your existing application. So let's say if you have a retail app, uh, and you don't want, let's say it can be in Shopify or WordPress, but you want to run a background job, तो आप सोचोगे कि अच्छा अब मुझे वर्डप्रेस, जो कि मैंने एक लो कोड नो कोड सोल्यूशन था जिसके अंदर मैंने प्लगइन्स यूज करते हुए या मैंने उसको ग्राफिकल इंटरफेस यूज करते हुए एक एप्लीकेशन डेवलप की, नाउ आई हैव टू
लर्न के मुझे कि उसका जो वर्डप्रेस का फ्रेमवर्क है वो क्या है। मुझे तो सिंपल काम ये करना था कि मुझे अपनी सेल्स जितनी भी हुई थी उसको कंपाइल करना था और एक रिपोर्ट मैंने भेजनी थी सीईओ को या एडमिन को या सेल्स स्टाफ को। तो इसके लिए मैं क्या करूं कि मैं पूरा फ्रेमवर्क लर्न करूं? नहीं, यू कैन राइट एप्लीकेशन स्टैंड अलोन or that can be infused with your existing application based on the APIs. So database आपके पास available होती है वर्डप्रेस की, आप उसमें से डेटा फेच करके एक बैकग्राउंड जॉब बना सकते हो। So the triggers, the event can be data related, it can be time related, or it can be standard HTTP service जहाँ के ऊपर आप URL को हिट करो और वो एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाए। And in the last service that I would like to highlight is Kubernetes. So Azure Kubernetes is a managed Kubernetes service that you can use to deploy and manage containerized application. You literally need minimal container orchestration expertise to use AKS. And AKS reduces the complexity and operational overhead of managing Kubernetes by offloading much of that responsibility to Azure. So if you have a containerized application, your best bet would be Azure Kubernetes service. Um, Over to Apeksha. Uh, if you want to highlight and if you want to share some insight on Azure Data Factory. Of course. Thank you, Usman. So, what is Azure Data Factory? Azure Data Factory is an orchestration tool for ingestion and transformation. So, it's like a passive. It's a PaaS service where you can use to ingest the data. First, what are the features of it? Easy to use. It is a code free. Like आप अगर किसी को कोडिंग नहीं आती हो तो भी आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो why it is used in scenario where you can do extract transform load or extract load transform. uh, then you can use in SSIS service. आपने SSIS सर्विस ऑफलाइन यूज किया होगा तो वो rehost आप क्लाउड में कर सकते हो। Then it has a built-in Git and CI/CD feature. So suppose if you are using GitHub and you want to store the code in GitHub, whatever work you have done in Data Factory, तो आप वो भी कर सकते हो using CI/CD feature. कॉस्ट इफेक्टिव, ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। वहां पे आप पे एज यू गो करते हो वॉट एवर सर्विस यू आर यूजिंग। सपोज डेटा फैक्ट्री हैज टू कंपोनेंट। फर्स्ट इज डेटा पाइपलाइन, सेकेंड इज डेटा फ्लो। डेटा पाइपलाइन इज नथिंग बट यूज फॉर डेटा इंजेक्शन. You can get data from different hybrid solutions, whether it could be like Oracle, AWS, or any other cloud or on-premise cloud. You can get the data. तो जो जब आप इंजेस्ट करते हो तो कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो उसी बेस पे आपको पे एज यू गो काउंट किया जाता है। इट इज अ फुल्ली मैनेज सर्वरलेस. So you don't, it is a PaaS service. As Usman explained, PaaS service is where you don't need to worry about the OS, you don't need to worry about the infrastructure. It does everything for you and you need to just worry about your data. आप एक एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, डेटा और आपको क्या चाहिए। Then it scales on demand. Scalability is easily available. Suppose आपका workload अभी limited है, you are working for a website, online website, और अगर कोई सेल आती है नहीं तो कुछ चीजें बढ़ती है पर्टिकुलर डे पे, तो वो आप स्केल कर सकते हो उस दिन। तो स्केलेबिलिटी इजीली अवेलेबल है। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। यहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। सो बेसिकली कनेक्टर्स आर यूज टू इंटीग्रेट द डेटा एंड ट्रांसफॉर्म, लाइक विल सी इन अ बिट। Then as I said that this is a orchestration. ये मॉनिटरिंग भी करता है। सपोज आप अगर कोई पाइपलाइन रन कर रहे हैं तो वो मॉनिटरिंग के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। कोई फेल हो गया तो कैसा फेल, क्यों फेल हो गया, आप ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गो एंड चेक. It is a very intelligent tool because it uses the AI based copy actions use करते हैं, बहुत सारे templates है इसके अंदर, तो it uses power query. So it's a very good in terms of like ingestion and transformation. और ये predictive pipelines के लिए भी use किया जाता है.
बेसिकली इसमें 4 कंपोनेंट्स है. If I have to say that, क्या components है इसके? तो first of all, it's a pipeline. Pipeline मतलब it's a group of activities. If you have a task, group of to perform the task. Task is nothing but one task. Like suppose I am copying from source to destination. It's a task. So group of activities is nothing but a pipeline. और एक्टिविटी क्या होती है? एज आई एक्सप्लेन, एक एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं आप. Data set, it's one of the component. Data set, it represents the data structure within the data store. Link services, link services is like, suppose I want a data from Oracle. I'm setting up the information needed, what is link कर रही हूँ मैं basically Azure के साथ first, और फिर बाद में I will use in pipeline or I will use in different component. Data flow is basically to transform the data. This is also a code free. Supposedly I'll give you a very basic example. आप अगर डेटा लेते हो कोई भी, तो वो क्लीन ही रहेगा ये नहीं बोल सकते हम. उसमें नॉइज रहेगा, एरर्स रहेंगे, कुछ डेटा मिसिंग रहेगा, नल रहेगा. तो वो सब आप क्लीन कैसे करते हो? तो यूजिंग डेटा फ्लो. एंड वहां पे आपको कोई कोड नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आप यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं होता है. और इंटीग्रेशन रन टाइम इज वन ऑफ द कंपोनेंट. उसमें क्या होता है कि आप जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए क्रिएट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. देन कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज दिस इज नथिंग बट अ ओवरव्यू ऑफ डेटा फैक्ट्री. सो डेटा फैक्ट्री में हमारे ऑडियंस कौन कौन हो सकते हैं? इट इज इनटू डिफरेंट साइलोज people can use. Like suppose data engineer है, तो वो स्पेसिफिकली एक इंजेक्शन पे काम करेंगे, ज्यादातर कनेक्टर्स पे काम करेंगे, कहाँ से डेटा लाना है, क्लीन करना है, वो सारी चीजें करेंगे वो लोग. अगर डेटा साइंटिस्ट है तो वो ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डेटा. तो उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं. आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे टूल्स है. Like it's a code free or it can be code centric. Code centric we can use like a notebooks or data bricks, all those things where you can easily write the code and transform the data. Data bricks, and then you can use mapping data flow also in terms of transformation. Wrangling data flow, this is nothing but the cleaning data. Like कोई मैंने जैसे कहा noise है, कोई है, you can clean easily. Further, if you want to enrich the data using ML, you want to do any kind of predictions, then you can use Azure ML, which is easily available there. Then let's go like this one, ETL. So first of all, I got the data from different sources. So sources क्या है मेरी? ऑन प्रीमाइज डेटा हो सकता है, मेरा डेटा ओरेकल पे हो सकता है, सैप पे हो सकता है, और डिफरेंट क्लाउड पे हो सकता है, एज्योर पे हो सकता है, AWS, GCP, any third party, or can be SaaS based. SaaS based is something like after PaaS it comes SaaS based, which is which is specifically like Dynamic 365, Salesforce, all this. And so basically difference क्या है PaaS और SaaS में? So PaaS में you have to get your data, you have to certain limit, you have to mention what you want to do. But SaaS में इतना नहीं होता है. SaaS में बस your data and little bit configuration, that's all needed. So if you can see, this is ETL. So ingest the data, that is extraction of the data, transform the data, and then citizen integrated. This is nothing but the third person who is viewing your reports. Suppose decision maker है कोई, तो वो view कैसे करेगा? तो वो serve होगा. तो it can be served in the Power BI visualize form, like okay मेरे को decision लेना है कि पिछले साल का sales क्या हुआ है, अगर e-commerce website है तो इस साल मैं उसके हिसाब से स्टॉक वेयर हाउस डिसाइड कर सकती हूँ. तो दैट कैन बी डन यूजिंग पावर BI. Serve is something like you can save the data. You can save data in different form. We have Synapse now, we have Fabric, lot of tools are coming up. So serve कैसे करना चाहते हैं वो कस्टमर के सिनेरियो पे डिपेंड भी करता है. Then we do have orchestrate and monitor. Basically this is an orchestration tool which helps you to bring the data and perform actions on it. तो monitoring के भी अलग अलग है, which we'll be seeing in a while. Azure Data Lake, this is a very good component over here. So data lake is nothing but it is used for storage. You can get any type of storage and you can store that in the data lake, Azure Data Lake.
Now I would like to share my screen and just show you the demo. I hope the screen is visible. Yes, it is. Okay, wonderful. So basically, if you see, this is nothing but the Azure portal. In Azure portal, what I have done is I have created one Azure data factory. So you can see here, I have created a data factory. I've created resource group and then location and all those things. You can also like easily just search like ADF or Azure data factories, go over here, and then you can just say like create. Once you start creating, it will ask you certain details. Basically we are like initiating like or we are creating an instance of data factory subscription. Then you can create one resource group. आप resource group करते हो. Resource group basically एक प्रोजेक्ट की तरह होता है. आप उसमें सारे आपके जो भी आइटम्स है वो डाल सकते हो. फिर बाद में comes the name, region, version, whatever you want to use, and then rest are GitHub tags, create review, networking. If there is any kind of security you want to do, you can do that. So I have already created this जो आपको यहाँ दिख रहा है. And once I have, 1 second, I'll go to data factories again. Okay. If I go to data factories, then I should be able to see the data factory which I have created. If I click over here, it gives me option to launch the studio. इसका separate studio आता है जो मैं launch करूंगी तो it will take me. I can, if I click on that, it is taking me to the data factory studio now. So with the time we have, I can just open. This is the already opened one. So basically, this is how the data factory studio looks like. So what does data factory studio does? Like if I go on the home button, it ingests the data. As I mentioned that ingestion कर सकते हो आप different different connectors से. फिर orchestrate करता है वो data pipeline को help आपको code free बनाने में. फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो डेटा. और आपका अगर ऑलरेडी कोई SSIS एप्लीकेशन रनिंग है तो आप वो क्लाउड पे भी मूव कर सकते हो. Then we do have something here called pipelines and all these components which I explained you. सपोज आपको पाइपलाइन क्रिएट करनी है तो आप पाइपलाइन पे क्लिक कर सकते हो. नहीं तो अगर आपको कोई गैलरी है मतलब टेम्पलेट चाहिए तो इट्स ऑलरेडी गिवन अ टेम्पलेट फॉर यू हियर. सपोजिटली लाइक आपको अगर मूव करना है डेटा और कॉपी करना है डेटा कोई इसमें से तो आप इजीली यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए. insert from SAP to any kind of other data type or database to data explorer. बल्क में कॉपी कर रहे हो अगर आप फाइल से सपोजिटली तो फाइल्स पे क्लिक करके आप वैसे कॉन्फ़िगर कर लो तो आपको वो डेटा इजीली अवेलेबल टेम्पलेट्स है तो आपको यहाँ पे कोड करने की जरूरत नहीं है. The basic example I would like to show, if I create on pipeline and then I say create pipeline, then I will be able to get all the activities over here which I was talking. When I get all the activities, I will just check what activities I have here copy activity. So I'll just do a copy activity over here. When I have a copy activity, you will be able to see the name and all those things. Then there is a source activity. Source activity is basically I want to move the data, move and transform, as you can read over here. So moving data from source to destination we can do using this. So आपको अगर move करना है data तो source पे आप जाके यहाँ पे click कर सकते हैं. Plus this is nothing but the connectors. Now we have 100 plus built-in connectors over here which helps you to connect data. Like for example मेरा डेटा अगर Amazon RDS Oracle पे है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और कॉन्फ़िगर करूंगी which will help me to move the data. If I have data on Amazon S3, I can do that using here. Cosmos DB में मेरा data है तो I can use this template. So this is basically I'm trying to get the data structure. और फिर this is nothing but the connector. I can move the data from one to source and sync. Like a destination is nothing but a sync.
So for example, if I click on here, again, I get a lot of connectors where I want to save the data. I'm now copying the data from source and then I will be storing the data into destination. So you can see there is a lot of other destinations. I have Databricks. If I want to do further transformation, I can use Databricks. Or if I want to store the data in SQL, I can do that. Suppose I got data from AWS. Now I can store in SQL. That can be performed. Mapping can be also done. Suppose if I'm getting data from other source, so it can be different. So how I can map the data in both the things should be equal. So all those things are mentioned over here. You do have Azure function. If you want to perform any kind of Azure function, as Usman explained, that we can trigger these things. So Azure function can be utilized. So if I say on success, please execute the Azure function. So it what it will do is it will validate, and when I say debug, it will, once the copy is done, it will perform the action of sending the message or sending an alert that copy activity has been done successfully. So triggers are there. Suppose if you want to do this I'm doing it manually if I press on the debug. But trigger is something like, suppose end of the day, if in any kind of organization they want to perform the triggers, so it's been defined already. So when the trigger should execute after 6 p.m. or something like that, so it will perform the trigger and all the actions will be performed likewise. So you can see there are a lot of things like Databricks is there, which can be used for notebooks are there. Basically आप अगर and what is the speciality of this, like why I am telling this is a code free, this is like on anybody can do, because मैं यहाँ पे drag and drop कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा, but backend में यहाँ पे JSON code develop हो रहा है. If you see here, like JSON code has been developed for me, whatever I'm dragging and dropping. So this is basically no code approach, which is a low code approach, which can be easily used by any, you don't need to be developer for that. You can easily use this and integrate, transform and perform ETL, which are the basic tasks performed by data engineers. Then we do have something here. I'll just cancel it over here. This is nothing but pipeline. If you want to perform any kind of transformation, just click over here, create it, and then you can perform. Then monitoring can be done, which can run the pipeline trigger. Or अगर आपका कोई integration runtime है, as I mentioned, if you have any kind of, suppose I want to move the data from Oracle, I'm creating the environment that can be, that is nothing but the integration runtime. If I want alert or metrics, it's possible over here. If you want to manage lot of things, it's all the things are available over here. Suppose आपको CI/CD चाहिए, तो you can set up a code repository over here. The new feature Apache Airflow is also available. Security things are available. If you are saving data in data lake, how can you say that my data is protected? You can do that using Purview. Purview is where protects your data, what has been stored in data lake or whatever has been used in data factory. Then we have a learning center here. Suppose if you want to learn more about data factory, they have given this option that quick starter tutorials, videos and templates, whatever you is needed in your situation, you can use it. This is nothing but Azure Data Factory. Over to you, Usman. Thank you, Apeksha. So now I am going to share my screen and quickly go through one of the demos. So I'm assuming my screen is visible. Yes. परफेक्ट सो हम बात करेंगे एक डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल के बारे में इधर एक डेमो है मेरे पास बहुत छोटा सा जिसके अंदर हम डिप्लॉय करेंगे कोड एंड हाउ इट कैन बी डिप्लॉयड ऑन Azure. So before going to Azure, in interest of save time, I'm going to push code and then I will move to Azure platform. थोड़ा बहुत मैं discuss करूंगा about Azure services and then I'll shift to Azure DevOps to give you a perspective के कैसे real world के अंदर हम application deploy कर रहे होते हैं और वो continuous integration, continuous deployment कैसे चल रही होती है. So I'm going to update the code and I'm going to commit the code. So I'm using Visual Studio here to push my code. So my uh,
environment where the repository is connected is already connected in Visual Studio. So I'm interest of saving time. I've already pre-cooked this demo. I'm going back to Visual Studio, Azure platform. So on portal.azure.com, यहाँ के ऊपर अगर हमने कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है, so we have to click create a resource and then you can see all the categories. I'm going to talk about a bit more on web apps. So I've created a web app जहाँ के ऊपर मेरी जो application है मैं इसको deploy करना चाह रहा हूँ. So I will click create. एज यू कैन सी, जो शुरू के अंदर हमने सेशन में बात की थी, अगर आपने कोई भी एक सर्विस बनाई है एजर के ऊपर तो दूसरी सर्विस क्रिएट करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम होना चाहिए in order to offload the complexity and more focus more on your solution. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही आपको environment मिल रहा है जहाँ में जिस तरह अपेक्षा ने एक नई सर्विस डेटा फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए यूज किया था. So I've already created one of the web apps. जब आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस. सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. वन ऑफ इट इज बी के ये कहीं से भी एक्सेस हो सकती है. इट्स नॉट अ बिग डील, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो इसमें आप डिप्लॉयमेंट के लिए आप स्लॉट सेट कर सकते हो कि फॉर इंस्टेंस जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उसमें मल्टीपल टीम्स काम कर रही होती हैं, जैसे डेवलपर हैं, क्यूए है, या आपने प्रोडक्शन के लिए आपने साइट मेंटेन करनी है, तो मल्टीपल कॉपीज या मल्टीपल रिपोजिटरीज होती हैं, तो आप उनको कैसे मेंटेन कर सकते हो? थ्रू डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स. सो यू डोंट हैव टू डिप्लॉय सेपरेट एप्लीकेशंस फॉर ईच ऑफ योर environment. So it can be easily managed. आप load testing built in integrated है. So let's say if you want to stress test your application, कि how would it handle the load, you can do load testing. डिप्लॉयमेंट टूल्स हमारे पास, मैंने अभी इसमें कॉन्फ़िगर किया हुआ है ऑलरेडी एज़्योर डेवऑप्स. सो एज सुन एज आई पुश द कोड, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन में. अगर आपको खुद से मैन्युअली पैकेज एक डिप्लॉय करना है, जैसे आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू, एफटीपी के थ्रू करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे. And then monitoring is already infused here. So if you want to understand what part of your application is failing, तो वहाँ पे आपको logs अगर आपने देखने हैं तो that's the best area that you can look for, and also the footprint of your users के कहाँ पे कहाँ से users आ रहे हैं. So a lot of features are there. In interest of time, I would shift to my DevOps portal and give you a quick perspective. Azure DevOps is a deployment and a code maintenance tool. Not only just this, आप अपने teams manage कर सकते हैं यहाँ के ऊपर. You can, when you create a when you log into Azure DevOps, dev.azure.com से जाके आप अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हो, then you set up an organization. So already done that. And when the project is set up, so you आपको ये सर्विसेज नजर आएंगी जहाँ के ऊपर आपके बोर्ड्स नजर आएंगे. वहाँ पे आपके जितने भी टास्क हैं एप्लीकेशन के, जो आपकी टीम के हैं, जैसे यूजर स्टोरीज होती हैं, आपके बग्स होते हैं, वो सारी चीजें आप इधर मेंटेन कर सकते हो. एंड रिपोजिटरीज के अंदर आपके पास मल्टीपल रिपोजिटरीज हो सकती हैं. जैसे मेरे केस के अंदर एक ही एप्लीकेशन है तो आई हैव ओनली वन रिपोजिटरी, बट आई एम इमेजिनिंग के इन द रिटेल स्टोर और इन इंडस्ट्री यू हैव मल्टीपल एप्लीकेशन. सो एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन रिपोजिटरी, तो आप यहाँ पे उसको मेंटेन कर सकते हैं. देन यू कैन प्रोवाइड यूजर राइट्स, और देन यू कैन बिल्ड अप पाइपलाइंस, जो कि पाइपलाइंस आर बेसिकली एजेंट्स जो जिस तरीके से आप मैन्युअली डिप्लॉय कर सकते हो. सो इमेजिन यू हैव अ कोड, सो आप उसका पैकेज बनाओगे, देन यू मैन्युअली डिप्लॉय ऑन अ सर्वर. सो वो काम जो पैकेज बनाने का और डिप्लॉयमेंट का वो ऑफलोड हो जाता है अगर आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख लें जो कि आपकी एप्लीकेशन का पैकेज बना दे, एंड देन यू राइट एन एजेंट जो कि आपकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देता है. सो क्विकली आई वुड edit this to give you a perspective of how easy it is. So there are two ways to write an agent.
One of it would be a drag drop option, जैसे आपने देखा डेटा फैक्ट्री के अंदर. सो अगर आप लो कोड नो कोड वाले पे जाना चाहते हो तो इसमें आपके पास ये क्लासिक एडिटर यूज करोगे. इफ यू प्रेफर टू राइट अ स्क्रिप्ट देन यू हैव एन ऑप्शन जहाँ पे आप एक YAML में जेसन के अंदर आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो यही सारे टास्क के लिए. सो बेसिकली एजेंट वही काम कर रहा है. एप्लीकेशन पैकेज बनाने के लिए आपकी रिस्टोर कर रहा है, बिल्ड कर रहा है एंड देन पब्लिश कर रहा है पैकेज एक लोकेशन के ऊपर जहां से आपकी दूसरी पाइपलाइन या दूसरा एजेंट जो उसको पैकेज लेटेस्ट पैकेज को पिक करेगा और देन डिप्लॉयड करेगा सोर्स के ऊपर. इट कैन बी एनी प्लेटफॉर्म एनी क्लाउड. सो हमारे केस में एजर है तो एजर की वेब ऐप के ऊपर वो डिप्लॉय कर रहा होगा रिलीज वाला हमारा एजेंट. So I am going to edit this as well and show you के how it looks like. So इसके दो कंपोनेंट्स अगर हम बात करें आर्टिफैक्ट्स एंड स्टेजेस. ये डिप्लॉयमेंट वाला हमारा एजेंट है. इसका काम है कि लेटेस्ट पैकेज को पकड़ना जो आपका जो फोल्डर कहें कि जहाँ के ऊपर आपका लेटेस्ट पैकेज ड्रॉप होगा ये वहां से पिक करता है उसको. मैंने इसका ट्रिगर सेट किया हुआ है कंटिन्यू. सो एज सून एज न्यू पैकेज इज अवेलेबल ये पैकेज पैक होगा और ये डिप्लॉय हो जाएगा एजर के ऊपर. ये हम कहाँ के ऊपर सेट कर रहे होंगे. हम जॉब्स में जाते हैं तो इट हैज़ अ टास्क कि ये एजेंट पैक करेगा पैकेज को और डिप्लॉय कर देगा मेरी वेब ऐप के ऊपर डेमो जिसका नाम है डेमो HEC ऐप. So that's sort of a quick overview of the life cycle. If I update, so it would have a latest copy. So जो मैंने content change किया था, so you don't have to worry about manually deploying an application. We have very short time, so I want to summarize our discussion with a short discussion. So over to you, Apeksha. Great. So what we are gonna do here is like we are gonna do a role play. So I'm a final year student who is performing his project, who is performing her project, and Usman here is gonna be a Microsoft a consultant who will be helping me around with my project. Let's get started. Hi Great. Usman, thanks for meeting with me. I'm excited about developing my social networking app named Social Connect. I wanted to make sure that I use the Azure PaaS service to its fully potential. Can you help me with that? Hi, Apeksha. Absolutely. I would love to help. Let's start with an overview of your application. So, what are the functionalities you're planning to include in your application, Social Connect? Sure. So basically, I want to create the user profiles. Like user can create the profiles, post updates, upload photos, videos, comments, like the post, like get the notification, like a social media. Great. You have a solid idea, I say, Apeksha. We can leverage several Azure PaaS services for this functionality. So first, let's talk about hosting your application. That's a starting point. Have you considered Azure App Service? Well, I have heard about it, but I'm not sure how it would fit to my project. Azure App Service is a perfect for hosting web application and API applications. It supports multiple languages, so whether it's in .NET, PHP, or any framework. It offers also auto scaling and monitoring, so you can deploy your Social Connect front end web app and also the back end APIs. And it supports continuous deployment, so you can integrate it with GitHub or Azure DevOps. That sounds exactly what I need. How about the database? I need a place to store all the user profiles, post, comments, likes. So in that perspective, I would say Azure SQL database is a great choice for that. It's fully managed relational database service with high availability and security. So it can scale your application as it grows, and it comes with built-in performance tuning and monitoring. So you'll spend less time in the database management and more time on your developing your application. That's reassuring. Also, I was thinking as we live in the AI world now, everything has becoming like AI. What if I want to process some images or send notification? Do you have suggestion for that? Yes, definitely. For that, I would say you can leverage Azure.
cognitive services, now known as Azure AI Service. So that has computer vision API that can help with the image recognition, identifying object and extracting information from those image. And I'm imagining you have you want to understand the sentiments of the comments, so you can leverage text analytics API that can determine sentiments of post and comments, and helping you identify a positive, neutral, or negative content. So these APIs can be easily integrated, and these are the turnkey solutions. So I hope that can help you. Great. Nice. I was looking for idea like serverless. How about Mhm. like storing user uploaded photos or videos? Great. So serverless are a very intelligent solution. Let's say I would say Azure Functions would be ideal here, that allow a small piece of code in response to an event. For instance, you can use Azure Functions to send notification when a user is mentioned in the post, or to process or resize image when they are uploaded. So it's a serverless compute service. You only pay for the time when it's executed. Awesome. And how about if I want to add some kind of like cognitive services features? I would say, again, that can be covered by uh, the Azure AI service. Have you thought about monitoring your application? Um, what are your plans of monitoring the performance or end user of your application? I want to perform like my app, if it's able to monitor, it would be great for the performance. In that way, I would suggest Azure has covered that there too. With Azure Monitor and Application Insights, you can get details on the matrices and the logs and the performance of application. They provide real-time monitoring, alerting, diagnostic capabilities, and since Azure App Service supports auto scaling, you can also handle and increase traffic automatically. So everything I believe is covered in within Azure. This is fantastic, Usman. I feel much more confident about using Azure Pass for my project now. Like, thank you so much for your guidance. You're welcome, Apeksha. Best of luck for your social connect. And if you need any help or you need any assistance, you know where to find me. Thank you. Thank you. So thank you so much, everyone, for joining the session. That's all from my side and Apeksha. Please stay tuned for the other sessions. We will be uploading our presentation like you have found from Bilal. So you'll find our contact so you can reach us out on LinkedIn, and happy learning. Thank you all. Thank you.